Hello students, today I am going to start a new topic, that is the force between the two charges. We know that the like charge repel to each other while unlike charge attract to each other. So यहाँ पर नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे while पॉजिटिव चार्जेस भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे. In the earlier classes we have already studied, but negative and the positive charges may attract to each other. यहां हम फोर्स की डायरेक्शन तो जानते हैं, फोर्स का नेचर तो हम जानते हैं, लेकिन द फिजिक्स इज ऑल अबाउट द मेजरमेंट. सो दो चार्जेस के बीच में कितना फोर्स अप्लाई होता है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, इसकी कैलकुलेशन के लिए कूलम ने एक फॉर्मूला डेवलप किया जो कि दो चार्जेस के बीच में अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है. न्यूटन के ग्रेविटेशनल फॉर्मूले से इंस्पायर होकर कूलम्स ने अपना जो फॉर्मूला डेवलप किया वो बिल्कुल एनालॉगस था न्यूटन के ग्रेविटेशनल फॉर्मूले से. मोर ओवर अगर मैं कंपेयर करता हूं तो ग्रेविटेशनल फॉर्मूला जो है न्यूटन का, दैट इज F इज इक्वल टू G मास 1 मास 2 अपॉन आर स्क्वायर. एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूं मैं ग्रेविटेशनल फॉर्मूले का, तब आपको समझने में बहुत आसानी होगी. हमें पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स केवल बॉडी के मास की वजह से लगता है. बड़ा मास छोटे मास पर फोर्स अप्लाई कर सकता है. तो दो बॉडीज के बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो मास के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करेगा और उन दोनों के बीच के डिस्टेंस पर भी डिपेंड करेगा. एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर, अगर दो मासेस के बीच में मैं कोई मीडियम रखता हूं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मीडियम? अगर मैंने पेपर रखा, कोई एस्बेस्टस सीट रखी, कोई मैंने वाटर रख दिया बीच में, तो ग्रेविटेशनल फोर्स पर कोई फर्क नहीं पड़ता. बट यहां पर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में कैलकुलेशन करना चाहते हैं. तो यहां न्यूटन के फॉर्मूले से इंस्पायर होकर कूलम्स ने जो फॉर्मूला डेवलप किया उसमें एक खास बात थी कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो दो चार्जेस पर डिपेंड करता है, उनके डिस्टेंस पर भी डिपेंड करता है, लेकिन मीडियम एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. नाउ लेट्स स्टार्ट कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. In order to quantify, Coulomb's developed his formula, and according to the Coulomb's law or the Coulomb's law of electrostatic force, the force between the two charges depends on the magnitude of charges. So if there are two charges having magnitude q1 and magnitude q2, let for the simplicity, if the q1 and q2 charges are positive in nature, the force of repulsion takes place between them. So this is the direction of force of repulsion between them, F and F. So the force of repulsion between the two charges, why I am saying the force of repulsion? Because of I have considered here the two charges as positive. If you considered here the two charges positive and negative, then you can say the force of attraction. So now the force of repulsion between the two charges depends on the product of the charges. That is, F is proportional to Q1 into Q2. What is the meaning of Q1 into Q2? It means if Q1 charge increase 2 times, the force may also increase in 2 times. If Q2 charge increase 2 times, then force also increases 2 times. But if charge Q1 increase 3 times and the charge Q2 increase 4 times, so it doesn't mean that the force will be increase 3 plus 4 is equal to 7 times. No, the force will increase 12 times. It means the force is increasing on the basis of multiplication of two charges. So that is why the force is depends on the product of two charges. And second thing, if the distance between the two charges is small r, or let's say capital R, depends on your convenient way, that is force is proportional to 1 upon r square. Any effect, any force, it is depends on the inverse square law. Analogously, the same inverse square law followed by the gravitational force. So here, while combining these two here, what will we get exactly? F is proportional to Q1
Q2 upon R square. In order to put the equality sign here, this force can be written as F is equal to K Q1 Q2 upon R square. What is K here? K is the constant of proportionality, and it is also known as electrostatic force constant, or it is also known as Coulomb's constant. This Coulomb's constant depends on the medium. Unit of the Coulomb's constant. So the unit of the Coulomb constant is calculated as the K is equal to force into R square upon Q1 into Q2. So the unit of force is Newton. The unit of the distance is meter square here, and the unit of the charge is Coulomb, and here are two charges, so I can write here the Coulomb square. All the units are taken here in SI system. So the unit of Coulomb's constant, it is equal to Newton meter square Coulomb to the power minus 2. Coulomb calculated the value of Coulomb's constant, it is equal to 9 into 10 to the power 9 Newton meter square Coulomb to the power minus 2. This value of this Coulomb's constant is only valid for free space, that is vacuum. This constant of proportionality can be written as K is equal to 1 upon 4 pi epsilon. What is the term here I used, that is 1 upon 4 pi epsilon. In the next lecture, we will study about the permittivity of the medium. It is a special quality, that is, if I place a medium between the two charges, then how the force is affected by the medium. So this epsilon here, this term, this epsilon here represent the permittivity of the medium. So this term I will explain in the next lecture. Thank you so much.